Yes, these are the real things, real vocabularies through which you can express yourself, through your communication skills can become good. So you must know about these are the vocabularies. If you have clarity, if you have how to use these are the vocabularies, so in your sentences, in your while expressing yourself, you will get to know about and you will not face problem and you will not गेट एनी हेजिटेशन, राइट. जब आपको इन सब वोकेबलरीज के बारे में पता होगा तो आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे और सब कुछ क्लियर मैनर में बता पाओगे एंड यू विल नॉट like face any trouble while speaking English. Your communication skills and your describing things will elaborated and you will get the right words and you can explain. Well, thank you very much for being connected and learning spoken English with my channel. We are going to learn about all these things and you will not face problem and you have better things to express yourself. So my dear friend, more like you might have heard from thousands or millions of times that people use these other sentences. You must ऑल्सो अवेयर, आपको इन सब चीज़ों के बारे में अगर इंफॉर्मेशन होगा, नॉलेज होगा, क्लैरिटी होगी तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, राइट. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन बाय वन एंड वेयर आई विल एक्सप्लेन, आई विल गिव most of the important things so that you can understand and you can build up your communication skills. Well, you can see I have mentioned about someday. आप you might have heard that, right. आपने सुना होगा कि people said someday I will work, कुछ दिन मैं काम करूँगा, someday I will start my learning English, or whenever like when somebody asking to you when do you want to work, someday I will start working, someday I will take my life. कुछ दिन, हिंदी में क्या बोलते हैं, someday मतलब कुछ दिन, कुछ दिन बाद I will work on my skills, someday after I will work on my skills and I will boosting my knowledge, someday कुछ दिन बाद. when do you want to work for this project, इस प्रोजेक्ट के बारे में आप कब काम करना चाहोगे, someday later I will talk to it or someday later I will think about it, कुछ दिन बाद मैं देखूंगा, later on someday I will check it and I will look it. So someday I will become good speaker and I can speak good English. You can ask yourself or you can say to yourself, someday I will be at good level of speaking English and I will speak, nobody can like say about anything about my communication skills, right. Someday I will start practice, कुछ दिन में मैं practice start करूँगा, right. Someday. Now again say nowadays. Nowadays means आजकल. Nowadays what are you doing, आजकल आप क्या कर रहे हो, nowadays what are you doing. Oh well, nowadays I'm not doing anything special, just working, just studying and I'm learning some new things. Nowadays how, what do you feel. Well, nowadays it is quite cold and the things are going nowadays, right. Nowadays means आजकल सब अच्छा है, nowadays everything is fine. Nowadays what are you doing. Nowadays I'm just practicing my English and I'm doing what things makes difficult and I'm doing in practice. Nowadays I think आजकल तो बहुत ही suffocated है, it is very hot, right. So nowadays it is very hot और nowadays and I'm enjoying my life. जब कोई भी आपसे पूछता है कि nowadays आप मीन्स आजकल आप क्या कर रहे हो, so nowadays what are you doing, nowadays what are you doing. Well, nowadays I just learning the new things और nowadays I'm preparing for my examination, आजकल मैं examination की preparation कर रहा हूँ, right now. Nowadays I'm preparing for my examinations और nowadays I feel quite happy, आजकल मुझे अच्छा लग रहा है ना. Nowadays means आजकल, इन दिनों में, right. Nowadays. Thereafter. So my dear friend, thereafter I hope you understand, you have heard that. Thereafter means, so in English we say thereafter, in Hindi we call उसके बाद, right. Thereafter. Well, I was not doing practice, thereafter I got failed. मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, उसके बाद मैं फेल हो गया, राइट. देयर आफ्टर मीन्स उसके नॉट प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशन, देयर आफ्टर आई गॉट वेरी मिनिमम मार्क्स इन माई रिजल्ट्स, राइट. देयर आफ्टर ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, देयर आफ्टर ही विजिट इन गुड कंपनीज एंड ही इज़ वर्किंग. वह बहुत ही इंटेलिजेंट था, फिर उसके बाद वो अच्छे कंपनी में गया और वो काम कर रहे हैं. देयर आफ्टर मीन्स उसके बाद. आफ्टर मीन्स आज से, राइट. हैंस आफ्टर मतलब आज से. नाउ कंपनी ने नई पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की है, हैंस आफ्टर वी विल नॉट फेस प्रॉब्लम, राइट. हैंस आफ्टर आप चाहे बोलो चाहे हैंस फोर्थ बोलो, द मीनिंग इज द सेम, राइट. मीनिंग सेम है हैंस आफ्टर और हैंस फोर्थ,
हैंस आफ्टर आई विल नॉट डू एनी मिस्टेक, आज से मैं कोई मिस्टेक नहीं करूँगा. हैंस आफ्टर आई विल नॉट डू एनी मिस्टेक. आई हैव गॉन थ्रू सर्टेन प्रोसेस, हैंस आफ्टर आई विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश. आज से मैं ट्राई एंड अंडरस्टैंड करूँगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंस है मेरा कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने में. राइट, हैंस आफ्टर, आज से अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, आज से मैं अच्छा काम करूँगा. लाइक आई हैव वेस्टेड माई टाइम ए लॉट, हैंस आफ्टर आई विल डू गुड वर्क. राइट, हैंस आफ्टर. राइट, आज से या अब से. राइट, और हैंस आफ्टर I was facing lots of difficult, hence after I will ask to my parents what to do or I will ask to my teacher. मैं बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहा था, बट आज से I will ask to my parents that what should I do. तो when you do any mistake, जब कभी भी आप कोई मिस्टेक करते हो तो बोलते हो कि नहीं नेक्स्ट टाइम से अब नहीं होगा. राइट, सो एट दैट टाइम, एट दैट एक्सप्रेशंस you have to describe through hence after or henceforth. The meaning is the same, right? So henceforth, suppose that you are working in company and you did mistake, so you are saying your what you will say to your manager, hence after I will not do mistake, please give me the opportunity. You visit somewhere and you did wrong work or you don't understand, then you apologize to your senior or the person or the organization. I'm sorry sir, hence after I will not do this mistake. आज से मैं ये मिस्टेक अब नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा. राइट, कभी भी हमें बोलना होता है किसी भी समय या किसी भी टाइम, तो हम क्या बोलते हैं, एनी टाइम यू कैन कम, आप कभी भी आ सकते हो. एट व्हाट टाइम शैल आई गो टू स्कूल, एनी टाइम यू कैन गो टू द स्कूल. राइट, और एट व्हाट टाइम शुड आई कम एट योर होम, एनी टाइम, कभी भी, किसी भी टाइम यू कैन कम, एनी टाइम यू कैन कम. Right, or when we are going to conduct the meeting, anytime, any suitable time you can understand and we can hold the meetings. Right, anytime means किसी भी time. I hope I don't want to give more explanation because these are the basic sentences which you must understand. जब हमें हिंदी में डिस्क्राइब करना होता है, जब इंग्लिश में हमें बोलना होता है कुछ समय, उसके लिए हम सम टाइम का यूज़ करते हैं. सम टाइम आई डू प्रैक्टिस एंड सम टाइम I go outside to walk और sometime I do good work. कुछ टाइम के लिए मैं अच्छा काम करता हूँ, कभी मैं कुछ समय के लिए मैं बाहर खेलने के लिए जाता हूँ. Sometime I go to play football or cricket or whatever you like, so whatever you call, right? Sometime I feel very good that I'm enjoying my life, or I feel good sometimes when I speak good English. I feel very good when I speak English sometimes. Right, sometimes, कुछ समय के लिए. Yes, wherein means जिसमें means wherein, right. He created a situation where everyone felt uncomfortable. उसने ऐसा situation create किया जहाँ पर या जिसमें, wherein people feel uncomfortable. Right. I have given wonderful speech wherein I found myself more satisfied. मैंने अच्छा स्पीच दिया जहाँ पर मैंने अपने आप को पाया कि आई एम टू मच सेटिस्फाइड. राइट, आई हैव गिवन गुड स्पीच वेयर इन आई फाउंड माई सेल्फ एट गुड पोजिशन और आई बिकेम सेटिस्फाइड. राइट, वेयर इन, जिसमें या इसमें, उसके लिए हम वेयर इन का यूज करते हैं. वेयर अपॉन मीन्स जिस पर या जिसमें. आई वॉज स्पीकिंग गुड इंग्लिश वेयर अपॉन आई गॉट गुड अपॉर्चुनिटीज इन एमएनसीज. इंग्लिश बोल रहा था इसीलिए मेरा सिलेक्शन एमएनसीज कंपनी में हो गया. आई वॉज कम्युनिकेटिंग एवरीथिंग इन इंग्लिश वेयर अपॉन आई गॉट अपॉर्चुनिटीज to work good companies. I was communicating everything in English whereupon interviewer found myself at the right candidate. I was speaking good English whereupon interviewer find that I am the right person. Right, whereupon, जिसमें, right, and thereupon. Same things, my dear friend, you can see whereupon, thereupon. Now these are the very similar to each other, they are very close to each other, and you can see thereafter and hence after. These are the very similar things. You have to identify
आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस. बाय द सिचुएशनल बेस्ड यू कैन यूज लाइक दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. वेयर अपॉन एंड देयर अपॉन you have to understand. And same thing here, like thereafter, hereafter, or henceforth and hence after. Vocabularies, these are the words quite similar to each other, and there is a very minor differences. I think that things we should not consider, and we can able to speak with helping of these vocabularies. Yes, thereupon means उसके बाद. मैं कंपनी में काम कर रहा था पर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने जॉब छोड़ दिया. I was working in company, I felt not good, so thereupon I left my job. मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था इंग्लिश बोलने में, तब से मैंने इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू कर दी. I was facing problem to speak English. Thereupon I started speaking English. Right now I can able to speak, and right now I can communicate with anybody or about any topics, right? Thereupon, my dear friend, there are like very quite meaning to each other. You have to identify on the situational based on the circumstances. You can use like whereupon and thereupon, and here thereafter and hence after, hereafter or henceforth. These are very common and similar vocabularies to each other. They have very similar meanings and similar understanding. My dear friend, you can use. You have to identify, and you have to सबसे पहले आपको identify करना पड़ेगा, and then you can able to understand. They have very similar meaning. You have to understand that yes, you need to speak, and you should have understanding. When you have understanding, you can form your sentences, you can speak good English, you can try and you can do your best, but understanding is important, and little understanding, it can create interest in your side brain and your mind, so definitely you are going to learn more. My dear friends, such kind of videos you can watch my videos, and there are lots of videos which I have uploaded. You can visit and boost your confidence, boost your knowledge, and try to understand. Definitely your communication skill is going to be practiced, and you have to just speak, right? So before speaking you should have material. So material I'm giving you, the things which were lacking, the things which you didn't have knowledge, that things I'm delivering. You can learn from my channel, and if you feel good and everything is happening, so you please subscribe my channel. This is my humble request, and leave your comments if you have anything, and just let me know. Thank you very much for your precious time and your effort for learning. Thank you.